ask the question. If you want me to go through it a bit, it is like we know that bioenergetics is the transformation of free energy in a living system. Okay, and it's a form of energy. Now, what is form of energy? Energy cannot be created nor destroyed, but we know one thing, that it is present in every chemical molecule, in every bond. Okay, and you cannot destroy it, but it can be converted. I mean, it can change its form. Okay, the form of energy can be changed, like from mechanical energy to chemical energy and so on. But it can, according to law of conservation of energy, energy can neither be created nor destroyed, but can only be changed from one form to another. So, if the question is for law of conservation of energy, or what is the law of energy, this statement you can easily quote. Okay, this is what I wanted you all to quote. Okay, okay, this is what was in the question. And of course, it is the quantitative study. What we are doing is bioenergetics, and we are studying quantitatively energy transformation that occurs within living cells. Every substance, every chemical substance has an energy in the form of chemical bonds. Now that energy is holding the atoms in a bond. Okay, for example, even for carbon dioxide, CO2, there is a chemical energy in that which is holding carbon and oxygen together. Followed it? But we can say that this is free energy of the substance represented always by delta G. Okay, and this, another point we know that to synthesize a compound from its element. Okay, element means from raw material. Carbon, hydrogen, oxygen join together in a specific ratio, you get one molecule of glucose or say carbohydrate. They are made with CHO. But again, whether it is galactose, glucose, fructose, there is certain ratio, isn't it? वो C2H2O1, something like that एक जमाने में हम पढ़ते थे long back biochemistry किताबों में होता था कि भाई ये फॉर्मूला होगा तो कार्बोहाइड्रेट, all right? But it's not that anymore, isn't it? Because things are evolving. But we know one thing, that to synthesize a compound from its raw material or its element, energy is consumed. And if this compound is broken, energy is released. And the energy occurring in these reactions this constitutes bioenergetics. That is it. What is bioenergetics? It is the quantitative study of energy transformation that is occurring within a living cell. That is how you define bioenergy. All right? Got it? Okay. Any question? This was maybe किसी के दिमाग में ये बात आई हो कि हम इसकी definition कैसे दें, right? So this is the definition. Quantitative study of energy transformation that occurs within a living cell. Further on, आप देखो कि क्वेश्चन कैसा है. अगर वो ज्यादा कुछ मांग रहा है तो फिर आप दे सकते हो. Okay, that a compound when it is synthesized, energy is consumed, and when it is broken down to its element, energy is released. So together, this reaction requires energy, which is known as bioenergetics. Okay, good enough. Okay, any question? ये समझ में आ गया? Okay. वकास का क्वेश्चन तो नहीं है, कोई हैंड रेज है? नहीं मैम, अभी तक नहीं किया मैम, अभी तक तो कोई हैंड रेज नहीं किया. ओके, then we see what is energy. See, energy is defined as the capacity to do work. ठीक है, किसी की एनर्जी ज्यादा होती है, किसी की एनर्जी कम होती है, isn't it? Some people are very active, some people are a bit lazy, कम एनर्जी होती है या वो यूटिलाइज नहीं करना चाहते. Anyway, bioenergetic processes such as cellular respiration or photosynthesis, they are all essential for cellular metabolism and they all require energy. अब true
laws of bioenergetics. Energy cannot be created or destroyed, and it can be changed from one form to another. Okay, this is the study of bioenergetics or the law of bioenergetics. ठीक है ना? All right. अब एंटरगोनिक एंड एक्सर्गोनिक रिएक्शन है. देखो कुछ लोगों ने वर्ड यूज किया है एंडोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक. ऑलराइट, एक्सेप्टेड. लेकिन एक बात और, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं या आउटसाइड द बॉडी इन विट्रो भी हम कह सकते हैं. लेकिन जब हम इन विवो की बात करते हैं, इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम, हम वर्ड यूज करते हैं एक्सर्गोनिक एंड एंडरगोनिक. ऑलराइट, टर्मिनोलॉजी तो वही है ना. एक्सोथर्मिक गिविंग आउट हीट, एंडोथर्मिक गिविंग हीट एंड एंडोथर्मिक टेकिंग इन हीट एनर्जी. जब हम सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करेंगे तो वी से इट इज एन एंडरगोनिक और एन एक्सर्गोनिक रिएक्शन. Reaction occurring in a biological system requires energy or it does not. Now suppose if we have a substance A plus B going towards C plus D, okay, it will proceed in the right direction if A and B have more energy than C and D. It would be a spontaneous reaction. A B कितना energetic है कि वो C and D में convert हो जाता है into its product. But if the energy of A and B is less, ठीक है. अच्छा, एक बात और कि ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन होगा. अगर A B की एनर्जी ज्यादा है कंपेयर टू C and D, तो ये जो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है वो एक्सर्गोनिक रिएक्शन होगा. और कैटाबॉलिक रिएक्शंस जिसमें बिगर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर एक्सर्गोनिक रिएक्शन. जैसे कि ग्लूकोज को अगर हम ग्लाइकोलिटिक पाथवे में देखेंगे तो इट इज एन एक्सर्गोनिक रिएक्शन. वरना ये बात है, देखो ग्लूकोज एक बिग मॉलिक्यूल है. It will be broken down into carbon dioxide and water and ATP will be released, right? Glycolysis पढ़ ली ना. तो अब अगर हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं into smaller molecules, we get ATP, but it's an exergonic reaction. ठीक है ना? और ये एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू परफॉर्म वर्क. अभी जैसे यूरिया भी ब्रेक होता है into ammonia and carbon dioxide and energy is released. This again a catabolic reaction है. मतलब कि catabolic reaction energy release करते हैं. Okay, exergonic. ठीक है ना? Now at equilibrium all substrate is used up and 99% product is formed with energy produced. ये तो equilibrium पर होता है. And such reactions are irreversible. जिसमें एनर्जी रिलीज हुई वो irreversible reaction है. वो दोबारा फिर देखो अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड से यूरिया बनता है, isn't it? With ammonia and carbon dioxide, लेकिन it is not a reversible reaction. अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए एंजाइम भी अलग है. कार्बोनाइल फॉस्फेट सिंथेज याद है ना मेरे यूरिया साइकिल. तो you need energy. That's it. Okay. Then again, now if we talk of A and B coming to C and D, वही चीज है. If the free energy A and B की कम है तो क्या होगा? Reaction को right direction में ले जाने के लिए to form a product, we have to supply energy from outside. Okay, we have to give them energy from outside, and such reactions are endergonic reactions. They require energy from outside. इसको हम ATP देंगे, ठीक है. इससे हमको ATP नहीं मिलेगा, इसको हमें ATP देना होगा. अब कुछ याद आया आप लोगों को? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक्टिव ग्लूकोज बनता है. तो क्या होता है? ATP यूज होती है ना. याद आया? फ्रॉम ग्लाइकोलिटिक की बात करिए, ग्लाइकोलिसिस फ्रॉम ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यू गिव एनर्जी. उसको फॉस्फोराइलेट करते हैं तो ATP ब्रेक डाउन हो जाता है. ATP ब्रेक डाउन होता है इनटू ADP, ठीक है ना. ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट रिलीजिंग एनर्जी एंड फॉर्म्स एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. और वो फॉस्फेट एक अपना फॉस्फेट दे देता है ग्लूकोज को. तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना एंड इट इज एन एनर्जी रिच कंपाउंड. अब बात समझ में आ गई बेटा व्हाट इट इज? सो सच रिएक्शंस वुड बी एनाबॉलिक.
कहते हैं कि जो एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं ना, जो फॉर्मेशन होते हैं, जो बिग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल्स, तुमको एनर्जी की जरूरत होती है, दोज आर एनाबॉलिक रिएक्शंस। ओके, सो कभी भी किसी चीज की सिंथेसिस होती है तो दैट वुड बी एनाबॉलिक, और अगर ब्रेक डाउन है तो कैटाबॉलिक, ठीक है, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। ओके, अब थोड़ा सा हमें देखना है थर्मोडायनेमिक्स। एनीवन हु कैन टॉक अबाउट थर्मोडायनेमिक्स? Yes, any hand raised? Any one of you can tell us about the what is thermodynamics? उसको definition दे दो, and then what are the laws of thermodynamics? Anyone? देखो बेटा, थर्मोडायनेमिक्स को जहाँ मैंने पढ़ा तो मैंने 4 लॉज देखे, ठीक है? ओके, सिद्रा, you raised hand, that's good. वकार से अनम्यूट कर दे सिद्रा को। सिद्रा आप अनम्यूट कर सकते हो। Ma'am, thermodynamics is the conversion of energy in the form of heat from one form to another. Okay, beta, that's good. That's good. Okay, transformation, and then it also goes according to some laws, isn't it? अगर हम ऐसे ही एनर्जी को छोड़ दो तो वो तो वेस्ट हो गई ना, it dissipates as a heat energy, but then there are some laws governing it, right? ठीक है? Okay, Sidra, you know the laws? We'll go through the laws again. ठीक है? Now, it is the thermal energy converted to and from other forms of energy and how it affects better. So this is how we studied thermodynamics. It's of course measuring of this energy, whether it is in the form of heat, its temperature, or in our body ATP. ठीक है ना? या biological system में ATP भी है. Now heat is conserved. We know that. हमने पढ़ लिया बहुत दफा. हाँ, heat can be changed from one form to another. Means from light to heat, heat to light. And then quantitative measurement of it would be like thermodynamics. Okay, measurement of it in different. अच्छा यार, ये I think मुझे भी याद नहीं है हमने किस ईयर में किया था, but वो याद है चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये सब वही तो चीजें हैं, isn't it? Remember those laws जो हमने पढ़े थे? You people are still fresh with those laws, ठीक है? कि वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर था और इतने पे ये इतना हुआ और all those things, combining Charles and Boyle's. All right, अब हम we are not going according to all those physics things. हमारी जो हमें जरूरत है ना बेटा, हम उसको देखते हैं ना. Now the amount of heat transferred by a substance depends on the speed and the number of atoms or molecules in motion. ठीक है? ये हमने देखा है ना कि every solution में Brownian movement कुछ याद है? Solution के अंदर एक zigzag motion होता रहता है. All the molecules they collide also. ठीक है? ज्यादा अगर atoms या molecules है solution में, यानी कि more concentrated अगर कोई solution है तो उसके molecules बड़ा इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है? And they can even have zigzag motion and they collide. ठीक है? उसकी collision में भी energy would be used up. ठीक है? And the quantity of heat would be more than they transfer. इस तरह से अगर समझ लें हम कि if we have a cup of hot tea, the molecules would be moving more faster in a cup of hot tea as compared to a cold tea, isn't it? Because उसका temperature high है, so the molecules are in a more constant motion than the, and the more heat that they would transfer compared to cold tea, isn't it? Okay. हंसने की बात नहीं बेटा, मुझे शायद चाय याद आ रही है. आप लोग चाय पी के बैठे होंगे ना फ्रेश होके, तो थोड़ा सा हमने इसका डाइवर्जन ले लिया, isn't it? But we know now that molecules are in a constant Brownian motion, right? Now, what are the 3 fundamental laws? First, second, and third. मैंने fourth law को नहीं लिया है बेटा, इसलिए कि fourth law मुझे किसी किताब में उसका authentication नहीं मिली. Okay? Fourth law मैंने देखा नेट पे, but don't go to that because अगर हमसे reference पूछा जाएगा तो अभी तक reference नहीं मिला. Alright? हर चीज का reference है. तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ के रेफरेंसेस मौजूद है, तो यू कैन इजीली कोट दैट. अच्छा, फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है? इट सेज दैट द टोटल इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी प्लस द वर्क डन ऑन द सिस्टम. ये समझ में आई बात? एनीवन वुड लाइक टू टॉक ऑन इट? कुछ इसका कोई इसके बारे में और बताएगा कोई? समवन? एनीवन ऑफ यू?
बेटा फर्स्ट लॉ क्या बता रहा है? कम ऑन, कोई हैंड रेज नहीं है वकास? मैम अभी तक हैंड रेज नहीं है इसमें। ओके ओके किड्स लिसन, फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है? इफ यू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, व्हाट आर यू डूइंग? कैसे इंक्रीज कर रहे हो सिस्टम की एनर्जी? यू आर गिविंग इट मोर थर्मल एनर्जी, ठीक है? आप उसको हीट ज्यादा दे रहे हो, ठीक है? अगर आप हीट ज्यादा दे रहे हो तो देयर इज एन इंक्रीज इन द थर्मल एनर्जी प्लस द वर्क जो आपका काम कर रहा है ना सिस्टम, वो मोर रैपिड काम करेगा। ओके ओके, मीन्स देखो बेटा, जैसे कि चलो बल्ब का सोच लो, एक बल्ब होता है जो लो वोल्टेज का होता है जैसे, और एक इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ऑफ अ हाई वोल्टेज। देखो एक बल्ब है हाई वोल्टेज का, वो ज्यादा एनर्जी देता है ना रूम में एज कंपेयर टू अ, जैसे समझो एग्जांपल नाइट बल्ब के ले लो, चलो सिंपल, नाइट बल्ब छोटा है, कम एनर्जी यूज करता है, इट यूजेस लेस एनर्जी एंड गिव्स यू लेस लाइट as compared to your the other bulbs that you're using while we are awake, ठीक है? इसी तरह you increase in the energy of a system, whether it is equal to the increase in thermal energy and the work done, ठीक है? Heat is conserved or heat conserved होगी, ठीक है? We know that. Now the second law कह रहा है कि heat energy cannot be transferred from a body at a lower temperature to at a higher temperature without the addition of energy. अब ये वही बात बोल रहे जो हम पहले भी बोल चुके हैं कि फ्रॉम अ लो टेम्परेचर टू अ हाई टेम्परेचर you cannot move unless energy is provided from outside, isn't it? We know that because from a low temperature you can't go to high temperature as it is. You have to add temperature from outside. Okay? And the third law states that the entropy of a pure system at absolute zero is zero. ठीक है? Entropy एक सिस्टम का जो डिसऑर्गेनाइजेशन कह लो या जो भी उसको समझ लो, डिसऑर्गेनाइजेशन या डिसओरिएंटेशन एट एन एब्सोल्यूट जीरो इज जीरो, ठीक है? और व्हाट इज एंट्रोपी? अब एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज, या उसको एस से वो डोनेट, सो इफ द सिंबल इज एस, इट्स अ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, ठीक है? ये एक वर्ड है एंट्रोपी। व्हाट इज एंथैल्पी? It is given by H. It is the heat content of a system. What is entropy? Entropy is the disorderness of a system. Okay? Disorderness. We can measure that. Then we have enthalpy. Enthalpy is the heat content of a system. And entropy is that fraction of enthalpy which is not available for work. Okay? मतलब enthalpy है, लेकिन ये वो पार्ट है जो हम काम में नहीं ला सकते हैं. Means it is just the heat content of a system, but we cannot utilize it for work energy. Okay, heat content है system की, but you cannot use it as an energy. ये तो सिर्फ मैंने वैसे बता दिया कि एनर्जी रिजर्व्स हैं, ये न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया में सारे एनर्जी एनवायरनमेंट का रीजन है बेटा. We don't have to go through that, right? Okay. Energy may occur in various forms. हमने कहा कि energy can be transferred from light to chemical energy, chemical to light energy, heat to electric energy, and so on. तो ये है कि these are the forms: light है, chemical है, heat है, electrical है, mechanical है, and sound energy. Okay, all these energies can be utilized. I think इससे आप लोगों ने कुछ practical में नहीं किया था, physics के practical में. I mean, I don't know if practicals होते हैं या नहीं, but there was a time when we did few of these experiments we did carry out in our physics lab long back. Now living organisms are able to use chemical form of energy. What do we use? We use chemical form of energy. But हम light energy नहीं use कर सकते, ना electrical, ना mechanical. We use only chemical energy. Now some common examples of energy uses in living organisms. क्या यूज करते हैं एनर्जी को, और वो भी केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी, सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल. याद है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो हम एटीपी यूज करते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप ही याद कर लो. सोडियम पोटेशियम पंप ही है तो यूजिंग एटीपी, यूजिंग एनर्जी. फेगोसाइटोसिस,
phagocytosis या exocytosis. All these require energy. Okay. Electrical transmission of nerve impulses, जो भी हमने बात की, ATPs वाली, ठीक है. Then mechanical contraction of muscles, ठीक है, and meeting of cilia and flagella for them to move, ठीक है ना. Microbes को भी तो move करना होता है, so they use that. Then mechanical contraction of muscles. I think contraction of muscles की बात करें तो हम creatine phosphate का भी example ले सकते हैं या quote कर सकते हैं, ठीक है, because creatine phosphate is stored in the muscle. And at the time when वो कहते हैं ना actin and myosin एक दूसरे से strike करते हैं, so it creatine phosphate breaks down, to give us ADP से ATP बनाता है for contraction, and itself becomes a waste product. Now heat energy released from respiration is used to maintain the constant body temperature in mammals and birds. हमारे जो respiration से जो heat energy निकलती है, that is for our body temperature maintenance, ठीक है ना. And then, despite energy existing in different forms, only two forms are suitable as energy sources for living organisms: light energy and chemical energy. But no organism can use directly light energy coming from sunlight as a source of energy. But only plants can do that. Okay, because organisms, living organisms, even the plants are living, isn't it? Because they utilize energy. They utilize sunlight, okay, and we utilize chemical energy. हम chemical energy ATP के form में use करते हैं, and plants what they do, they utilize sunlight. Photosynthetic reactions में वो carbohydrate बना के store करते हैं, ठीक है ना. They also have carbohydrate proteins, and they use light energy and respiration. Okay, now क्या होता है? देखो, photosynthesis acts as energy storing, while respiration acts as energy releasing. Photosynthesis में energy store हो रही है, ठीक है. They store up carbon dioxide, water and light, ठीक है. Ultraviolet radiation उनको absorb करके वो बनाता है starch, and then starch is stored up, ठीक है. And then we eat those plants. हम जो vegetable खाते हैं, हमने starch लिया, and then we break down starch, and during cellular respiration. अब जब हम यहाँ पे respiration की बात करते हैं ना, हम cellular respiration की बात कर रहे हैं, हम ATP का electron transport chain की बात कर रहे हैं. आप लोगों ने appreciate किया है नहीं किया? I think नहीं किया, कर लिया ना आपने? I think the people have done. I don't know exactly, but this is we are talking of cellular respiration, where your energy is released as ATP, and which makes us do work. Okay. अच्छा, ये एक बहुत common सी चीज याद रखो कि when bonds are formed, energy is stored, but when bonds are broken, energy is released. ये बहुत common सा statement है. Okay. और ये आपके कभी भी BCQ में या MCQ में हो सकता है. तो ये याद रखना कि bonds are formed, energy is stored, and when bonds are broken, energy will be released. What's energy? We know it's the capacity to work. Okay? Light energy can be transformed to chemical energy, which is usable by us. And this is by plants and algae and bacteria. Some bacteria. Okay? कुछ bacteria हैं जो कि light energy use करते हैं, not all. Chemical energy by process of respiration in all type of organisms. जिसमें carbohydrate है, carbon dioxide and water से glucose बना, and then glucose polymerizes to form starch and is stored in plants. And then what we do? We eat vegetable and then we consume starch. Isn't it? Okay. Now we know that चाहिए तो हमने already इसको discuss कर लिया ना. But this is an important process of photosynthesis. Okay. देखो, जब एक starch बना, ये बना starch, तो इतनी calories उसमें use up हो गई. Okay, 708,000 calories are used up to make one starch molecule. But when it is broken, जब ये starch molecule break up होता है, तो 688,000 energy मिलती है. कुछ और ये भी heat energy निकल जाती है. Okay, this is heat energy. ये कुछ store नहीं होती है plants. Plants में तो energy निकल जाती है. जो energy को sunlight से लेता है, ठीक है, और जो वो यूज अप करता है, okay, to make up a starch molecule
is more than what it is given off. But then when it is given off, this is only lost. It's not stored as ATP. It's just lost as heat energy. ठीक है, ये plants के साथ. Synthesis of glucose is endergonic reaction and hydrolysis of glucose is exergonic reaction. ये प्लीज याद रखो कि जब ग्लूकोज को हम सिंथेसाइज करते हैं, it's an endergonic reaction because the endergonic is used up here, and when it is hydrolyzed, it's broken up, it is exergonic. तो मैंने जब एग्जाम्पल पूछा था, आप लोगों ने मुझे पता नहीं, हाँ कुछ बच्चों ने जरूर ग्लूकोज का भी एग्जाम्पल दिया है, किसी ने स्टार्च का एग्जाम्पल दे दिया कि फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ स्टार्च इज एन एक्सरगोनिक, लेकिन कई बच्चों ने मुझे जवाब सही नहीं दिया और एग्जाम्पल तो किसी ने कोट ही नहीं किया. अरे एग्जाम्पल बेटा आप मुझे प्रोटीन का भी दे देते या आप मुझे लिपिड का दे देते कि व्हेन अ ट्राइग्लिसराइड इज फॉर्म एनर्जी इज यूज्ड अप, व्हेन इट इज ब्रोकन एनर्जी इज रिलीज्ड, मैं उसको भी मान लूंगी. Now release of energy, these reactions are coupled reactions. देखो याद रखो कि ये सारे reactions coupled, ठीक है. अगर एक तरफ इनकी हाइड्रोलिसिस हो रही है तो दूसरी तरफ इनकी सिंथेसिस. Now chemical energy released in glucose oxidation, that is catabolism, is used in addition of phosphate to nucleotide ADP by phosphorylation reaction forming ATP. देखो मैंने न्यूक्लियोटाइड का वर्ड यूज किया है. Why? Because ADP is a nucleotide, ATP is a nucleotide. जैसे CTP, UTP, they are energy rich bonds, but they are nucleotide in nature. इनमें राइबोज है, इनमें प्यूरिन या पायरिमिडिन बेस है और इनमें राइबोज शुगर फॉस्फेट. ठीक है, तीनों चीजें हैं, तो तीन चीजें मिलकर बनाएगा न्यूक्लियोटाइड. समझे? न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें होती है, न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती है. अच्छा, तो ये हमने देखा. अब थोड़ा सा ये भी वही चीज है कि बेटा ग्लूकोज है, इसमें 38 ADP और 38 फॉस्फेट मिला दो तो 38 ATP बना और ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और 384,000 कैलोरीज रिलीज होती है इसके कैटाबॉलिज्म में. अगर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हुई तो ये इतनी कैलोरीज रिलीज होती हैं विद 38 ATP. ये 38 ATP की बात कर रहे हैं बेटा, वो अपने ख्याल में ग्लाइकोलाइटिक पाथवे की बात कर रहे हैं. ठीक है, और इसमें 38 ATP दो शायद यूज अप होती है तो कहीं 36 का भी कोटेशन आता है. बहरहाल जिस किताब को मैंने देखा मुश्ताक ने 38 बोला. ओके, दिस इज फ्रॉम मुश्ताक, तो वो है 38. ठीक है, और इतना कैलोरीज रिलीज हुई है. ओके, the 38 ATP produced here. अब ये जो 38 ATP बनी है, they can be hydrolyzed. अब 38 ATP को तोड़ दो. कैसे तोड़ोगे? तोड़ना है ना, we want to break it. ओके, कैसे हमने तोड़ा? 38 ATP इसको हमने ब्रेकअप किया into 38 ADP and 38 phosphate. 300,000 कैलोरीज आर फॉर्म, ये हमको मिली है. देखो यूटिलाइज ज्यादा कैटाबॉलिज्म कितनी हुई, ठीक है, लेकिन जब हमने ATP को itself ब्रेक किया तो फिर कितनी कैलोरीज. Now this released energy it can be utilized in other endergonic reactions. ये जब ATP बन गया ना, अब ये तो हीट एनर्जी में चली गई. ठीक है, ये जो 38 है जो कि केमिकल एनर्जी, देखो ये कैलोरीज है, दिस वुड बी गॉन एज योर हीट एनर्जी. बॉडी को भी तो मेंटेन करना है ना टेम्परेचर, तो इट इज यूटिलाइज्ड एज अ हीट एनर्जी. But then your ATP, which is your chemical energy, 38 ATP, जब ये ब्रेक डाउन करते हैं तो ये ATP फॉस्फेट बना के, और इतना ही बनाना 38 ATP and 38 phosphate और 300,000 calories. This is used, ये energy would be used in your other endergonic processes और चीजों को बनाने में काम आएगी. ठीक है, the mechanism of coupling of glucose or any other substance with phosphorylation of ADP to produce ATP is known as oxidative phosphorylation. Beta, what is oxidative phosphorylation? It's a coupled mechanism. जहाँ reduction हो रहा है वहाँ oxidation हो रहा है, जहाँ metabolism है वहाँ साथ में catabolism भी हो रहा है. Together these processes comprise oxidation phosphorylation. ठीक है, oxidation भी हुई और साथ में अगर कोई चीज ऑक्सीडाइज है तो वो फिर रिड्यूस भी हुई, फिर उसके साथ फॉस्फोराइलेशन भी हुआ, फॉस्फेट भी लगा, तो दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. अच्छा, कुछ एनर्जी रिच कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं. देखो जिसमें इतनी हीट एनर्जी है, एनर्जी रिच कंपाउंड्स में ATP, UTP
फॉस्फेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। बेटा ये सारे प्लीज इसमें से याद करने की कोशिश करना कि ये सब तुम्हें पता, राइट? Especially your energy rich nucleotides, these are energy rich nucleotides, ठीक है? They are energy rich bonds and all these creatine phosphate जो मसल्स में होता है ना बेटा, देखो क्रिएटिन फॉस्फेट मसल में है, एक्टिन मायोसिन जब स्लाइड करते हैं ना तो क्या होता है, एडीपी से एटीपी बनता है, आपको एनर्जी मसल्स में उसी वक्त नहीं मिलती है, क्रिएटिनिन बनता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट एंड सो मेनी कैलोरीज व्हिच इज लॉस्ट, दिस इज डिसिपिएटेड, okay, lost energy, but creatinine that again is a waste product and this is excreted into, right? हम अगर हमें किसी का क्रिएटिन का पता करना होता है, स्पेशली एज वी एज, कहते हैं कि एज के साथ साथ क्रिएटिनिन, क्योंकि मसल मास कम होने लगता है तो क्रिएटिनिन कम होने लगता है, ठीक है? क्रिएटिन की कॉन्सेंट, ये क्रिएटिनिन जो है ना बेटा, पता नहीं तुमने लैब में इसका प्रैक्टिकल आई डोंट नो बेटा कर, आई डोंट थिंक करा रहा है, लेकिन हम कराते थे बेटा। ये क्रिएटिनिन जो है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मसल मास, ऑलराइट? ये इसको नोट करो, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मसल मास, इट इज मोर इन मेल्स एज कंपेयर टू फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स में मसल मास कम है, फैट ज्यादा है, मेल्स में फैट कम है, मसल मास ज्यादा है, तो मेल्स में क्रिएटिनिन ज्यादा है, ओके, एज कंपेयर टू फीमेल्स। और ये सारे एनर्जी रिच कंपाउंड्स है, देखो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, कंट्रीबियूट फॉस्फोफॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट, पीपी, एनर्जी रिच, फैटी एसिड कोए, एनर्जी रिच, जहां पे कोए आया, जहां पर भी कोएंजाइम ए है, इट्स एन एनर्जी रिच कंपाउंड, याद रखो। सक्सेनाइल कोए, क्योंकि कोए है, इट्स एन एक्टिव सक्सेनिक कंपाउंड। एसिटाइल कोए, कोए डाल दिया एसिटिक एसिड में, एसिटाइल कोए एनर्जी रिच, ओके। क्रिएटिन फॉस्फेट एनर्जी रिच, ओके। अब आई थिंक हम कर चुके हैं ना इसकी इक्वेशन की, आई डोंट थिंक इट्स ऑल दैट नीडेड फॉर द इक्वेशन। अगर टाइम रहा तो फिर देखेंगे दोबारा, ठीक है? बस हेक्सोकाइनेज का तो तुम लोगों को पता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज एन एनर्जी रिच कंपाउंड, तो रिडॉक्स पोटेंशियल पता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाउ ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। And when a substance exists in both the states, the pair is called redox couple. NADH is a strong reducing agent. Oxygen is a strong oxidizing agent. NADH reducing है तो oxygen oxidizing. अच्छा, oxidation is loss of electron. ये भी definition से पता है कि example के लिए कि देखो अगर ferrous से इलेक्ट्रॉन निकला तो फेरिक बन गया, ठीक है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना, ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया फेरस से फेरिक। बट अगेन रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं फेरिक से फेरस बनाती तब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और अगर क्यूप्रस से क्यूप्रिक बनाया तो अगेन इट इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहते हैं, क्यूप्रस या क्यूप्रिक, आई डोंट रिमेंबर, बट एनीवे बेटा ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो इट इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। देखो दो पहले थे, अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें और ऐड हो गया। Both processes are tightly linked. Okay, whenever something is oxidized, other thing is simultaneously reduced. जैसे देखो NAD plus 2H plus 2 electron, ठीक है? अब इसको reduce करना है, तो reduce करने के लिए हाइड्रोजन तो है, but we have to add 2 electrons. So we have another substance XH2, जिससे 2 electrons मिल जाएंगे, ठीक है? यहाँ से ये भी reversible reaction, ये भी reversible, लेकिन अगर टोटल देखें तो NAD प्लस XH2, ये X निकल गया, प्लस NADH प्लस। So if you want to have a reduced NAD, we have to have like this, ठीक है? ये रिएक्शन है, इसके अंदर फिर आपका NADH बन जाता है। ये एग्जाम्पल तो मैंने सिर्फ एक उससे लिया है, लेकिन अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन को देखें, जैसे किसी भी ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में डिहाइड्रोजिनेज का एग्जांपल ले लो, ग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, तो उसमें भी यही हो रहा है ना कि NAD से NADH बन रहा है, तो वो NAD से NADH बना, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड वुड बी ऑक्सीडाइज्ड और वो कंपाउंड हाइड्रो NADH बन गया, वो रिड्यूस हो गया, दिस एंटर्स इनटू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है?
oxidant and reductant of some biological system. ये oxidants रहते हैं, मैंने ये दिया था तुम लोगों को slide, and this is some reductant. Okay, I think कोई question है या आगे बढ़ गया? Any question? देखो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन की हम बात करते हैं तो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन इज थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन हमने डेफिनेशन देखी, व्हाट इज रिडक्शन डेफिनेशन देखी, फिर हमने देखा कि कंपाउंड रिड्यूस हो रहा है, दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा है, दैट इज लाइक अ कपल्ड रिएक्शन, ठीक है। बट दिस इज थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ओके। एक बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन से हटकर अगर देखें तो एट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए हमें चेन में नहीं जाना है, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं होना है, बट यूजुअली इसके 2-3 केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं। टीसीएस साइकिल या क्रेब्स साइकिल में एक जगह पर है, याद है, एक ऐसा स्टेप है जहाँ पर फॉस्फोराइलेशन एट सबस्ट्रेट लेवल हो रही है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में नहीं जाना, वहीं पे एटीपी बन जाती है, ठीक है। और फिर एक और 2-3 और भी प्रोसेसेस हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन जैसे करते जाओगे ना आगे पता चलेगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, देखो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल, ठीक है ना, फ्रॉम हाई टू लो, फ्रॉम मोर नेगेटिव टू मोर पॉजिटिव। और जैसे एनर्जी इन वाटर, a component of electron transport chain इस तरह से arranged है ना, 1 2 3 4 5 according to their energy level, लो अकॉर्डिंग टू दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वो अरेंज है, ठीक है। और एनर्जी जो रिलीज हो रही है, देखो बॉडी के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है ना, वो छोटे छोटे अमाउंट में होती है। अगर एकदम से रिलीज हुई, जैसे आउटसाइड द बॉडी के कोई रिएक्शन हम करते हैं आउटसाइड द बॉडी, तो आप देखोगे कि एकदम से एनर्जी रिलीज हुई, एकदम से वो बबल्स निकले और हीट एनर्जी निकलती है। इन आवर बॉडी इज नॉट दैट, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी रिलीज होती है, ओके, दैट इज। अच्छा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन को एक मैंने है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ये ग्लाइकोलाइसिस का एग्जांपल है। पाइरुवेट काइनेज से एडीपी से एटीपी यही बनता है और पाइरुवेट बनता है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से पाइरुवेट बना। दिस इज एट द सबस्ट्रेट लेवल पे, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में नहीं गया, ये यहीं पे बना। फिर सक्सिनेट थायोकाइनेज एग्जांपल है, सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट बना, ये कोएंजाइम ए निकलता है और जीटीपी फॉस्फेट से मिलकर जीटीपी बनाता है। ये जीटीपी फिर एटीपी से मिलकर एटीपी एंड जीटीपी, यहाँ पर ये भी सबस्ट्रेट लेवल है। क्यों? देखो ये जीटीपी से जीटीपी बना, अब ये जीटीपी वहीं पर एडीपी से कंबाइन करके एटीपी बनाएगा। एक बार देखो बेटा, ये याद रखो, ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए भी देना था कि बॉडी जो है ना वो एटीपी यूज करती है, समझ में आई बात? व्हाट एवर बॉडी यूजेस एटीपी, अवर करेंसी, कहते हैं ना कि हर कंट्री की करेंसी है, जैसे पाकिस्तान की रुपीज है तो सऊदी अरब की रियाल है, व्हाटएवर, ठीक है। तो हमारी बॉडी की करेंसी है एटीपी। अगर जीटीपी भी बना है, इट विल नॉट बी यूटिलाइज्ड, our body will not utilize GTP unless it is converted to ATP. अगर UTP होता ना, यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट, तब भी हमारी बॉडी यूज नहीं करती। हमारी करेंसी क्या है हमारी बॉडी की? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो UTP also will combine with ADP and give you ATP. तो यही बात बेटा, are you following this point? No nucleotide, it is energy rich, but it cannot give you chemical energy to survive unless it is converted to ATP. All right, so our living currency is ATP. तो ये जो ये ना सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की बात क्या समझ लो कि ये जो सक्सिनेट है और ये पीसीएस साइकिल का है, सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल, इसको जो भी बोलो, उसमें जो ये स्टेप है वहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल पे कोएंजाइम निकला और ये जीडीपी से जीटीपी बना, जीटीपी विद एडीपी से एटीपी बना। फॉलोड इट?
अब देखो ये थोड़ा सा कंपैरिजन है ऑफ ऑक्सीडेशन इन लैब एंड इन बॉडी, ठीक है, दैट इज आउटसाइड द लैब, विट्रो एंड बॉडी वीवो। क्या होता है देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, कोई भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट्स रैपिड, लेकिन बॉडी में स्लो रिएक्शन, ओके, इट्स यूजुअली सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में रिएक्शन हुआ खत्म। यहाँ पे इट प्रोसीड्स इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स, कोई केमिकल रिएक्शन है वो स्लो स्लो प्रोसीड करता है, ठीक है। Now energy liberated is waste, energy liberated in fractions, okay, and stored in the form of energy rich compound like ATP। यहाँ पे तो एनर्जी बनी वेस्ट हो गई, हीट बना वेस्ट हो गया। हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनती है ऑफ स्टॉक सिंगल, मतलब इट प्रोसीड इन अ फ्रैक्शन, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो पूरी चेन चलती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की, उसमें देखोगे कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में गया और स्लोली स्लोली एनर्जी बनती है टिल द एंड में हमको बहुत सारे एटीपीज मिलते हैं व्हिच वी यूटिलाइज, ठीक है। और हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो भी एटीपी है, नॉट एज अ हीट एनर्जी। अच्छा, इट इज नॉट रेगुलेटेड, यहाँ पे रेगुलेशन नहीं है, पर हमारी बॉडी में तो एंजाइम्स है, ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम्स एंड स्पेसिफिक फैक्टर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, जो कि केमिकल रिएक्शन को रेगुलेट करते हैं। आउटसाइड द बॉडी दे डोंट हैव एनी एंजाइम। हाँ, कहीं पे कैटालिस्ट है, जो हम कहते हैं ना कि कैटालिस्ट है हमारी बॉडी में एंजाइम्स है, but those catalysts also they are not conserving energy, वो तो एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एनर्जी। लेकिन हमारी बॉडी के जो कैटालिस्ट है जिसको हम एंजाइम्स कहते हैं, they store energy, ठीक है ना, they are very helpful। So this is oxidoreductase reaction with specific factors। specific factors से मेरे दिमाग में तो एक ही चीज आई, our vitamins, जो कि मेटल्स, ठीक है ना, मेटल्स याद है ना, कहीं जैसे सेल्यूलोप्लाज्म में कॉपर चाहिए, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज में जिंक चाहिए एज अ मेटल, ठीक है। और कई ऐसे एंजाइम्स हैं जिसके अंदर हमें NAD और FAD चाहिए, जैसे रिडक्टेजेस है तो NAD चाहिए या FAD चाहिए, and then it is non-enzymatic while our reactions all require enzymes and they are regulated, enzymes उसको regulate करता है। तो ये पॉइंट्स हैं जो कुछ याद रखना चाहिए, we know it, ठीक है बेटा, लेकिन बाद दफा वो चीज क्लिक नहीं करती है। So now this should click and I think I have ended, but बेटा ये मुश्ताक में भी अच्छा दिया हुआ है, हार्पर में भी है, जिससे समझ में आ जाए, ठीक है। लिपिन को I haven't gone through it, I went through it now। तुम लोगों को जिस किताब से इजी लगे उससे देख लो, ओके। बट दिस इज योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्सेस है, जिसे मैंने कहा कि एनर्जी स्टेप वाइज बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग यू वांट टू नो बेटा? तब तो मैं ही बोलने जा रही हूँ, बोलो। एनी क्वेश्चन? No hand raised? Yes? Yes, Ishra? Unmute yourself, Ishra. I can't hear you, beta. Hello? Yes, madam. Yes, I can hear you now. Bolo, beta. Ma'am, can you explain the first law of thermodynamics? I didn't understand that. First law of thermodynamics. Okay, beta. बता देती हूँ। According to the equation, it says that the total energy of a system and its surrounding is constant. ठीक है, वो ये कह रहा है कि the total energy of a compound and its system is constant. That is what it says. कहाँ गया वो तो ये रहा टोटल। अच्छा देखो, एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये स्टेट क्या करता है, ये कह रहा है कि if you increase the total increase in the energy of a system is equal to the increase in thermal energy plus the work done on the system. You increase energy of a system, the total work done by the system would be equal to the thermal energy of the system. Okay, जो thermal जो आप increase कर रहे हो energy, whether increase in the form of heat energy या light energy, जो भी आप इंक्रीज कर रहे हो, तो पूरी जो सिस्टम है उसके अंदर जो
energy stored है, that is increasing, and the work also will be increased, whether it is movement of the molecules or whatever work they are doing, it will be increased. That is all. That is what the first law states. इसी तरह second law कह देता है कि heat energy cannot be transferred from a low to a high temperature, and we know that. Okay? The first two laws तो यही कह रहे हैं. Actually बेटा हमारे लिए तो यही बहुत, ठीक है? I think हमारे biological या biochemical point of view से these laws would be enough for us. Okay, we are more concerned with ATPs. हाँ, और सेकेंड लॉ कह रहा है कि एनी सिस्टम स्टेट, जैसे ये भी फर्स्ट लॉ भी तकरीबन यही बात कर रहा है. देखो, द टोटल एनर्जी चेंज ऑफ अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इज कांस्टेंट, ठीक है? और सेकेंड लॉ भी यही कह रहा है कि एनी सिस्टम कैन गो फ्रॉम अ स्टेट ऑफ लो प्रोबेबिलिटी टू अ स्टेट ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी. मींस लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर स्टेट एंड हाई प्रोबेबिलिटी डिसऑर्डर स्टेट, जिसको हम कहते हैं एंट्रोपी. ओके, फ्रॉम ऑर्डर्ड स्टेट टू अ डिसऑर्डर्ड स्टेट, ठीक है? तो इसके बाद इसकी सारी इक्वेशंस देने के बाद ये कह रहा है, इसके फाइनल इसके वर्डिक्स ये है फ्रॉम द इक्वेशन कि द डेल्टा चेंज इज अ चेंज इन एनर्जी और चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम. इट डिपेंड्स ऑन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम. ये सब दोनों लॉज को कंबाइन करके finally बोलना ये है, combining the first law, combining the second law of thermodynamics, the equation states that the change in free energy of a system depends on change in internal energy of the system and change in entropy of the system. ठीक है? Disorderness of a system भी change हो गया और उसकी internal energy भी change हुई. So that is denoted by delta G. क्योंकि वो एक पहला वाला लॉ कह रहा है कि द एनर्जी चेंज इन द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम और इट इज कांस्टेंट, ठीक है? तो ये दोनों को मिला के, और सेकंड लॉ में एंट्रोपी की बात कर रहा है, तो दोनों को मिला के दिस इज द फाइनल स्टेट, ठीक है? मतलब इसको याद रखना है कि फाइनल स्टेट में ये हो रहा है. हाँ, यही फर्स्ट लॉ है, यही है. सेकेंड लॉ भी यही है. सेकेंड लॉ ज्यादा है वो उसकी तरफ जा रहा है, एंट्रोपी की तरफ जा रहा है, ठीक है ना? और जो फर्स्ट लॉ है वो कह रहा है कि टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इज कांस्टेंट, ठीक है? तो बेटा थर्मोडायनामिक्स को अगर देखेंगे तो बहुत डेप्थ में है. इट्स नॉट ऑल दैट सिंपल. We have to go through physics and a lot of it, and when I went through it, थोड़ा बहुत मैंने कोशिश करी देखने की, and what I thought was कि ये बहुत डेप्थ में चला जाएगा, हमें इतने डेप्थ में नहीं जाना. ओके, so whatever was needed for us, उससे मैंने उठाया. Okay, sure. Is your query okay? Anyone else? But read it, okay? Go through the slides. Go through the slides, okay? No questions? Okay, thank you so much, Dr. Shanaz ma'am. Time up हो गया. Okay, okay, okay. All right. Thank you, Akash, and thank you, kids. Allah Hafiz. Hafiz. क्या बैन कर दीजिए.